In this question, a point light source is moving with a constant velocity v inside a transparent thin spherical shell of radius R, which is filled with a transparent liquid. If at t is equal to 0, light source is at the center of this sphere here, then at what time a thin dark ring will be visible for an observer outside this sphere? The refractive index of the liquid with respect to that of a spherical shell is 2 by root 3. So it is a clear-cut case of total internal reflection, because initially the source is at the center, and when the source is at the center, so light is going radially. So light is going radially outwards, and if light is going radially outwards, then angle of incidence at each point will be 0. So light is definitely coming out. Okay, so light is definitely coming out because angle of incidence is 0. It is normal incidence. So when this will start moving in this direction, then at any particular point angle of incidence will start increasing. कोई भी point अगर इस सर्किल इस स्फीयर के किसी पॉइंट को अगर हम कंसिडर करें, तो जैसे जैसे ये मूव करता जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल at this particular location, so this will be the direction of normal. So when light source is somewhere here, so then this will be the angle of incidence. If light source is here, then this is the angle of incidence. Obviously this angle is increased at this particular point. If source is here, then this angle is increased. If source is here, then this angle is again increased. So जैसे जैसे सोर्स की मूवमेंट इस डायरेक्शन में होती जा रही है, तो वैसे वैसे यहाँ पे जो एंगल है, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल विद द नॉर्मल इज इंक्रीजिंग, एंड कभी ना कभी एंगल दिस विल रीच टू क्रिटिकल एंगल. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल. यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या है? तो क्रिटिकल एंगल इज कैलकुलेटेड एज साइन थीटा. क्रिटिकल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर, and here this is 2 by root 3. This is rare medium is the spherical shell, and the denser medium is obviously the liquid, and we are given the ratio of this liquid divided by shell, and this is shell divided by liquid. This will be root 3 by 2. So obviously this theta critical is 60 degree. तो इसमें जस्ट हमें अब ये देखना है कि स्टार्टिंग में तो एंगल हर जगह पे 0 है, लाइट हर जगह से बाहर निकल रही है, तो किस पॉइंट पे पहुंच करके सबसे पहले यहाँ पर एंगल 60 डिग्री अचीव हो रहा है, और वो 60 डिग्री कहाँ पे अचीव हो रहा है, इस स्फीयर के किस पॉइंट पे अचीव हो रहा है, और उस समय पे जो सोर्स है वो कहाँ पर है. तो वी हैव टू कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ सोर्स, एंड बाय दैट लोकेशन वी विल एबल टू कैलकुलेट द टाइम कि कितना टाइम हो गया, बिकॉज इट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द लोकेशन ऑफ सोर्स, and at what point angle is reaching the critical angle, so that we have to see. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, let us make another diagram. I am taking another diagram here और अब के बार मैं किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन को यहाँ पे ले लेता हूँ. सपोज अगर जो सोर्स है, सोर्स सपोज यहाँ कहीं पर है, और ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर इज लेट्स से स्मॉल आर. तो सोर्स की इस लोकेशन के लिए मैं यहाँ पे देखना चाह रहा हूँ कि ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर के किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एंगल सबटेंड हो रहा है, सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ पर बन रहा है. ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज़ मैक्सिमम एट विच लोकेशन. तो व्हाट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस एट दिस लोकेशन इज लाइक दिस. So this is the normal, and this is the incident ray, and this angle is the angle of incidence. Let's say this angle is theta. This is obviously radius. So for a given r I am interested at what location of a sphere the angle is maximum, angle of incidence is maximum. Let's say this angle is phi. So I am applying sine rule in this triangle. So sine rule will give me sine theta divided by small r. This is equal to sine phi divided by capital R. So this sine theta is equal to this r by r into sine phi. So small r is fixed. I am changing point on the sphere.
So this angle is changing, theta is changing, phi is changing, but small r is fixed. I am fixing the source here. So for a particular r I am calculating this. So I want to find this maximum angle, and this angle is maximum when sin phi is maximum, and sin phi is maximum value is 1, or for that phi is equal to pi by 2. So that means for a given r, the angle of incidence is maximum, at this location, which is just above this point, above this source. So we have to drop a perpendicular from source on this sphere, from this point, just above this point on this source. So this perpendicular, on this perpendicular, the angle of incidence is maximum. So angle of incidence here is like this, and this angle of incidence is going to be maximum. So अब इसका मतलब क्या हुआ, जब सोर्स यहाँ पर होगा तो इसके जस्ट ऊपर ये वाला जो पॉइंट है, इसको अगर इससे मिला दें तो दिस एंगल इज़ मैक्सिमम. इसके अलावा जहाँ पर भी रेज, इससे जो रेज है वो रेज यहाँ पर भी जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है रेज, तो रेज आर गोइंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट. लेकिन यहाँ पर एंगल जो होगा और यहाँ पर जो एंगल होगा वो इस एंगल से कम होगा. तो दिस इज़ द मैक्सिमम एंगल. और अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल पर नहीं पहुँचा है तो कहीं पर भी एंगल क्रिटिकल एंगल पर नहीं आया होगा. सो वी आर नाउ श्योर अबाउट इट. अब इसके बाद जैसे ही यहाँ पर ये आगे पहुँचता है, तो आगे जब पहुँचेगा तो अगेन जो मैक्सिमम एंगल होगा, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा. अगर सोर्स सपोज यहाँ कहीं पहुँच जाता है तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस अगेन इसी तरह की लोकेशन पर होगा. जस्ट टू ड्रॉ दिस लाइन, एंड this angle will be the maximum angle when source is here. Okay, when source is here, and obviously when source is moved further, then this angle is now more than this angle. तो कभी ना कभी ऐसा होगा कि यहाँ पर पहुँचने के बाद में, ठीक है, किसी न किसी लोकेशन पे ये जो एंगल है, दिस एंगल इज़ जस्ट इक्वल टू क्रिटिकल एंगल. एंड आफ्टर दैट पॉइंट, सपोज एट दिस लोकेशन ये जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल हो गया, तो इसके जैसे ही जस्ट आगे पहुँचेंगे तो एंगल विल स्लाइटली इंक्रीज एंड TIR विल स्टार्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल स्टार्ट. सो वी विल हैव टू जस्ट सी दिस क्रिटिकल पॉइंट. ओके, वी हैव टू जस्ट सी दिस क्रिटिकल पॉइंट. So for suppose this critical point, this distance is, let's say, small r, and this angle is now equal to that critical angle theta c. Okay, so let us just make a fresh diagram here. So suppose the source is somewhere here, and this is that critical line, and this is that critical angle. Suppose this angle is now theta c, and this is equal to r. So obviously to find this r, we have to do sin theta c. This is equal to this r by r, and this r is simply equal to r sin theta c. So when source, जब source यहाँ कहीं पहुँचेगा तो उसके बाद से यहाँ पर ये TIR होना स्टार्ट हो जाएगा. TIR होना स्टार्ट होगा तो यहाँ पर एक ये जो जैसे यहाँ पर ये स्टार्ट हुआ, इस वैल्यू के लिए स्टार्ट होगा, तो यहाँ पर TIR हो रहा होगा और कहीं पर भी TIR नहीं होगा. ठीक है, और कहीं पर भी TIR नहीं होगा. तो यहाँ पर होने का मतलब है कि दिस इज़ अ स्फीयर, एंड फॉर स्फीयर we will get this kind of ring. All this point on this ring will undergo TIR. So all this point on this ring will undergo TIR. So इस तरीके का ring, यहाँ पर dark ring will be visible to observer outside. So what is this value? This value is r sin theta is say sin 60 degree, which is root 3 r by 2, and this is equal to, this r is simply equal to Vt, and this time this is 2. So this time is equal to simply root 3 r by 2v. So this is one of the methods. एक तो ये मेथड हो सकता है, और इसके अलावा अगर हमें ये चीज़ स्ट्राइक नहीं हो रही है कि परपेंडिकुलर, इस परपेंडिकुलर लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग ही यहाँ पर ये मैक्सिमम एंगल बनेगा यहाँ पर, तो थोड़ा और स्लाइटली हम मैथमेटिकल मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. तो लेट अस सी मेथड नंबर 2. सो लेट अस डिस्कस मेथड नंबर 2. तो मेथड नंबर 2 में मैंने जस्ट एक जनरल पॉइंट यहाँ पर ले लिया, और सपोज यहाँ पर जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया और यहाँ से TIR होना स्टार्ट हो गया. तो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो थीटा इज इक्वल टू थीटा c, एंड जैसे हमने अभी जस्ट देखा है तो इट इज़ इक्वल टू 60 डिग्री. अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूँ दैट इज़ cos थीटा, तो दिस cos थीटा इज़ r स्क्वायर, और ये डिस्टेंस x अज्यूम किया हुआ, तो r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस r स्क्वायर डिवाइड बाई 2rx. And obviously theta is 60 degree, so it is cos 60 degree which is equal to half. तो ये रिलेशन फॉलो करना चाहिए. तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी इक्वल टू हाफ फॉर TIR.
अब इसके बाद में यहाँ पर आर स्क्वायर, अब यहाँ पर एक्स हमने खुद से अज्यूम कर रखा है, तो एक्स हमारा अज्यूम्ड पैरामीटर है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख रहा हूँ एक्सप्रेशन को, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2rx, और इस एक्सप्रेशन को अलग कर रहा हूँ, तो दिस एक्स एंड 1x विल बी कैंसल्ड, सो एक्स डिवाइडेड बाई 2r एंड दिस इज इक्वल टू हाफ। जो ये एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन, सो दिस प्लस दिस, ऑब्वियसली दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव क्वांटिटी, एंड we can apply arithmetic mean is greater than or equal to geometric mean, so I am applying this. so ये जो दोनों terms हैं, one is this term and one is this term, इनका जो arithmetic mean है that should be greater than their geometric mean, so I am applying this. so r square minus r square divided by 2rx plus x divided by 2r divided by 2, this is the arithmetic mean, and geometric mean is just product of this two. So r square minus r square divided by 2rx multiplied by x by 2r. So what is the idea behind this? तो इसके पीछे जस्ट मेरा थॉट प्रोसेस यही है कि ये जो x है हमने खुद से अज्यूम किया, एंड दिस x इज गेटिंग कैंसल्ड बाय डूइंग दिस, सो ये x और ये x यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे ये इट विल बी 4r स्क्वायर 2r इंटू 2r, इट विल कम आउट ऑफ दिस रूट, एंड दिस वैल्यू इज फिक्स, दिस वैल्यू शुड बी हाफ, सो दिस इज हाफ, दिस इज 2 एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, so this is root of r square minus r square divided by 2r. so obviously 1 2 is cancelled, let us square both sides, so r square minus r square, this would be less than or equal to r square by 4, and by doing this we will get this r square should be greater than or equal to 3r square by 4, and from here this small r is greater than or equal to root 3r by 2. so what does this mean? r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस, इसका मतलब हुआ कि r की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट रूट 3r/2 होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में फिर आगे तो TIR होता ही रहेगा, अगर यहाँ पर, और हमने जस्ट अभी देखा है कि जैसे इसके ऊपर वाले पॉइंट पे ही वो TIR हो रहा है, ठीक है। तो एक बार r यहाँ पर पहुँच गया, उसके बाद जब ये आगे बढ़ेगा तो उसके बाद में कई सारे पॉइंट्स पे TIR होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जस्ट जो TIR स्टार्ट हो रहा है वो r इज इक्वल टू रूट 3r/2 पर हो रहा है, ठीक है। इसके लिए जो टाइम होगा दैट टाइम इज इक्वल टू रूट 3r डिवाइड बाई 2v, सो दिस इज द टाइम।